Jai Somnath friends, welcome to our e-learning classroom. Friends, in our previous videos, we have learned about heritage of India, as well as we have also learned about importance of the heritage. In this chapter, we have seen some information about resources. And friends, these resources are very important for human being. So today we are going to learn chapter number 8, natural resources. First of all, we should be aware the word of resource. So what does it mean by resource? We will see it later. Friend, we know that our earth is full of minerals and elements. यानी कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो एलिमेंट्स और मिनरल से भरी हुई है. There are thousands of elements which are buried in our earth. So we will see here it. So first number, there are thousands of elements in the nature, but all cannot be called resources. So our earth is full of elements, but we cannot say all these elements as a resource. Why? So we will see here. So second number given here, only those elements which can be fully utilized by man through his knowledge, skill, and expertise can be called resources. That means that this is the condition to how to say anything as a resource. So first of all here given those elements which can be fully utilized by man. That means कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट्स हो कि जिसको हमें फुल्ली हम यूटिलाइज कर सके, हमारी जो भी नीड्स है, हमारी जो भी डिजायर है, वो डिजायर को हम फुलफिल कर सके, और वो भी ह्यूमन अपने नॉलेज से, स्किल से, एक्सपर्टाइज से, तो उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं. वी विल सी इट अगेन. Only those elements which can be fully utilized by man through his knowledge, skill, and expertise can be called resources. Means any elements which are very useful for human beings, but human have to know how to use this thing. So after that we can say it a resource. So friend, here given the proper definition of the resource. You can see here things on which man is dependent, which can fulfill his needs, and for which man has the physical and intellectual capacity to utilize them are called as resources. So here given the proper definition of the resource. That means man is those things on which man completely depended to fulfill their desires and needs. यानी कि ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर मनुष्य completely dependent है, और वो भी अपने desires, अपनी जो wants है, जो needs है, वो fulfill करने में. But there is one condition. Man has the physical and intellectual capacity to utilize them. यानी कि वो चीज को मनुष्य यूज करे अपनी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के द्वारा, तो उसको ही हम रिसोर्स कह सकते हैं. Friends, we know that thousands of minerals and elements are available in present time from our earth. All these elements and minerals were also available in ancient time, but at that time people were not aware about their uses. So at that time we cannot say this as a resource. So we will see here, in ancient times man did not know about the minerals buried within the land. So these were not considered as resources at that time. Means जो अभी मिनरल्स हमें मिल रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं, तो वो सब एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में भी अवेलेबल थे, मगर उस वक्त के जो मनुष्य थे वो मनुष्य उससे अवेयर नहीं थे, उसको कैसे यूज करें वो उसको जानते नहीं थे. तो उसी मिनरल्स को, उसी एलिमेंट्स को हम उस वक्त रिसोर्स नहीं कह सकते. नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
Today, with the development in science and technology, man is able to utilize them in various ways. Friends, in the present time, human being progressing and due to the development of the science and technology, due to the development of science and technology, human are now able to use these things, elements in different ways. यानी कि अभी जो ह्यूमन है वो ह्यूमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना तो डेवलपमेंट कर सके हैं कि जो एलिमेंट्स है, जो भी मिनरल्स है, उसको कैसे हम यूटिलाइज करें। तो ये जो भी मिनरल्स है, एलिमेंट्स है, उसको हम अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको यूज करते हैं, तो इसलिए हम उसको अभी रिसोर्स कह सकते हैं। Next point, the natural resources should have both the virtues of utility and capability to work. So these two things or these two virtues are most important to consider as a resources to any elements. यानी कि कोई भी चीज हो तो उसको हम एलिमेंट्स तब कह सकते हैं कि जब उसमें ये दो क्वालिटीज हो या दो इसमें जो वर्च्यूज हो। और फर्स्ट नंबर है यहाँ पे यूटिलिटी, यानी कि उसको हम कैसे यूज करें वो, और दूसरा कैपेबिलिटी टू वर्क, यानी कि उसमें कार्य करने की, काम करने की क्षमता हो, तो उसको ही हम रिसोर्सेज कह सकते हैं। Next point, the resources are made of the interactions of the three as like nature, man and the culture. Means we can say anything as a resource when these three things are interact with each other. So first number is given here, nature, man and the कल्चर, यानी कि ये तीनों जो है वो तीनों के इंटरेक्शन से ही जो बनता है, तो वो रिसोर्स हम कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी विल सी हियर द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, फ्रॉम एंशिएंट टाइम people are using these resources to fulfill their desires and needs. So here given the resources, uses of the resources. The resources can be used in three ways. So here given first number ways, so resources as a food, यानी कि जो भी रिसोर्स है वो रिसोर्स को हम फूड की तरह कैसे यूज कर सके, तो उसको यहाँ पे दिया है। सो फर्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर, द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर feed us. So all the resources we can obtain from our nature and these resources feed us. यानी कि हर एक जो एलिमेंट्स है, हर एक जो रिसोर्सेज है, वो हमें नेचर से ही मिलते हैं और वही हमें फीड करते हैं। सेकंड पॉइंट, fruits, crops, milk and milk products and meat obtained from domestic animals, fish and other aquatic animals from reservoirs, honey prepared by honeybees, etc. are used as a food. Friend, you can see here this is like example of the food resources. So fruits, crops, milk, all these things are considered as a resources, as a food, as well as milk products and meat obtained from domestic animals. तो ये भी एक जो फूड के रिसोर्सेस है। देन फिश और अदर एक्वाटिक एनिमल्स, तो ये भी एक फूड रिसोर्स है। देन हनी प्रिपेयर फ्रॉम हनी बीज, सो ऑल दिस थिंग्स आर कंसिडर्ड एज ए फूड रिसोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट, thus नेचर सर्व्स एज अ फूड रिसोर्सेस, और इस तरह से ये जो नेचर है वो नेचर जो फूड का रिसोर्स है वो फूड का रिसोर्स हमें अवेलेबल करके देता है। Now friends, we will see here another use of resource. So here resource as a source of raw material, यानी कि जो भी रिसोर्स है वो रिसोर्स को हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करें। So here nature gives a large variety of products from forests. As we know friends, from forests we obtain many things, but we cannot use it in its original form. We have to modify it to get benefits from these things. यानी कि नेचर जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज ऐसी मिलती है कि जिससे हम बहुत सारी जो बेनिफिट्स ले सकते हैं, मगर हम उसको जैसे है वैसे ही हम उसको यूज नहीं कर सकते।
Friends, agro products, wool, hides and meat available from animals, mineral ores, etc. serves as raw material for many industries. Friends, here we have seen many examples which are used as raw material. We cannot use it in as it is form. Why? Because we cannot obtain any benefits. So here agro products, wool, hides and meat अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि ये सब जो चीज है वो चीज को हम यूज कर सकते हैं, मगर उसके लिए वहां पे जरूरी है कि जो भी इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्री में उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करे, यानी कि इंडस्ट्री में से उसका रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, उसको मॉडिफिकेशन उसके ऊपर होता है, उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं और या फिर उसका जो लाभ है वो लाभ हम ले सकते हैं। तो ये था हमारा जो रॉ मटेरियल की तरह रिसोर्स को कैसे यूज करें। नाउ वी विल सी हियर रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्स, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज कि जिसमें से हम एनर्जी ले सकते हैं। सो नेचर गिव्स अस कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। As we know friends, nature has given many mineral ores or many mineral things, but we cannot use it in as it is form. So suppose here given is coal, petroleum, natural gas, etc. These resources are used as fuel in industries as well as domestic fuel. So all these resources are useful as a fuel in industries as well as in डोमेस्टिक यूजेज, यानी कि ये सब जो रिसोर्सेज है वो सब रिसोर्सेज को इंडस्ट्री में एक फ्यूल की तरह, एक ईंधन की तरह हम यूज कर सकते हैं। साथ ही हम हमारी जो डोमेस्टिक फ्यूल है, डोमेस्टिक फ्यूल में भी उसको एनर्जी रिसोर्स की तरह हम यूज कर सकते हैं। Apart from this fuel things, we can obtain energy from solar insolation, wind, sea waves, tides and ebbs and waterfall etc. यानी कि ऊपर की जो हमने एग्जांपल देखे वो एग्जांपल से भी दूसरे जो एग्जांपल से यहाँ पे तो वो भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो वो कौन से हैं? तो सोलर इंसोलेशन, विंड, सी वेव्स, टाइड्स एंड एब्स एंड वाटरफॉल। तो ये भी इसका भी यूज करके हम जो एनर्जी है वो एनर्जी हम रिसीव कर सकते हैं। तो ये हमने जो देखे हैं वो रिसोर्स के यूजेस देखे हैं। सो फ्रेंड्स, वी हैव सीन हियर डिफरेंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। सो फर्स्ट यूजेस वी हैव सीन देयर रिसोर्सेज एज अ फूड। देन सेकंड रिसोर्स वी हैव सीन रिसोर्सेज एज अ raw material. Then third we have seen their resources as energy resources. So these are three ways from we use resources.